Okay friends, hi. Let's see today the round function. So ये काफ़ी important function है Excel sheet में and काफ़ी commonly ये use होता है. So let's see the round function. So it was invented in 1985. इसके पहले version के साथ वो आया था. So let's go straight to the round function. So इसका syntax बहुत ही simple है. So if you see, it will be round and then you need to give the number. Number is the value which you need to round and then उसके बाद number of digit. Number of digit determine the rounding precision. आपको कितने precision तक आपको उसको round करना है. So now let's see some of the examples. So let's say आपको round करना है 2 decimal places तक and this is the number 3.4567 and इसको आपको 2 digit तक करना है. Then it will be rounding. So because आपकी third value जो है 3456 it is greater than 5, right? So that's why आपका rounding होने के बाद it came to 3.46. Let's see another example. So another example is we want to round it to 1 decimal place. Okay, so 3.4. So यहाँ पर it will be the same because next one is round to the nearest whole number. So this is the example. So यहाँ पे interesting है हमने 7.5 दिया है and number of digit हमने 0 दी है, right? So इस केस में the output will be 8 because and there will be 0 means no decimal places. Okay, the next one is round down to 2 decimal places. So now it is 3.45 round down up to 2 decimal places. So यहाँ पर अगर ये देखते हैं तो this is also the same. Now next example, round to 0 decimal places. Okay, so it will be 13 because ये 12.5 यहाँ ऊपर से है तो 13 दिखाएगा. Round to the nearest 10. Yeah, so this is getting interesting now. So अगर आपको you need to round to nearest 10. So you have given the number 47 minus 1. So इसमें क्या देगा आपके पास nearest 10 क्या है? What is the nearest 10? So it is 50, 47 का. So it will give the number 50. So now let's go to the next thing. Round to nearest 100. Okay. So nearest 100 में करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगी नियरेस्ट 100 में वैल्यू. सो अगर आपने -1 दिया होता तो इट वुड हैव सोन यू 460 बट सिंस आपने -2 दिया है इट विल कन्वर्ट इट टू 500. ओके, या सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल राउंड अ नेगेटिव नंबर. सो लेट्स से -3.6 है तो इस केस में -4 हो जाएगा. Rounding a very small number, we are rounding it to digits. So because this is 5, so it will become 0.001. 0.01, sorry. Okay. So now these were the examples that we have. So thank you very much. जैसे ये काफ़ी important function है, so you will be using it more frequently. So now दोस्तों
हम इसी के साथ ही जाते हैं एक और जोक के ऊपर। सो आपको पता है दोस्तों, व्हाई डिड द नंबर ब्रेक अप विद द डेसिमल? बिकॉज इट कुड नॉट हैंडल द प्रेशर ऑफ राउंडिंग अप।